Ramatujame, and you're watching Hornbill TV. The concept of one nation, one election has been a topic of debate and discussion in Indian politics for some time. It refers to the idea of synchronizing the Lok Sabha, national and state legislative assembly elections so that they are held simultaneously rather than separate as they currently are. The main argument in favor of this concept is that it could potentially reduce the frequency of elections and associated costs, streamline governance and minimize the disruptions caused by frequent elections. The Modi government's move to constitute a committee headed by former President Ramnath Kovind to explore this concept indicates a renewed interest in the topic. The government's decision to convene a special session of Parliament in September 2023 has raised speculations that one nation, one election could be a top agenda item for discussion during this session. However, it is important to note that implementing such a significant change in the Indian electoral system would require constitutional amendments and the consensus of various political parties. The idea has been met with mixed reactions from different political parties and experts, with some expressing concerns about its feasibility and potential impact on federalism and regional interest. The formation of a committee led by former President Ramnath Kovind on September 1 to explore the one nation, one election concept has sent ripples through political circles. With the recent announcement of a special session of Parliament scheduled for September 18 to 22 by the government, there is growing anticipation that one nation and one election might be a prominent item on the government's agenda. As the opposition strengthens its unity in preparation for the 2024 Lok Sabha elections, Congress leader Rahul Gandhi dismissed the move as a distraction. Now, 5 states, including significant Hindi-speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, are set to hold assembly polls later this year. Additionally, Telangana is also gearing up for elections later this year. With only a few months remaining until the state assembly elections and the subsequent general elections in the following year, the discussion surrounding one nation, one election has taken center stage in the political arena. Now let's see what are the latest reactions when it comes to one nation, one election. Firstly, Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi said that right now a committee has been constituted. A report of the committee will come out which will be discussed. The Parliament is mature and discussions will take place. There is no need to get nervous. India is called the mother of democracy. There is evolution. I will discuss the agenda of special session of Parliament, he said. अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है, आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं, 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। पहले ऐसे, जहां तक मैं जानता हूं, पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में, मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक
विमर्शा तो होना चाहिए। Now on this same matter, former Chief Election Commissioner O.P. Rawat said that the government needs to make amendments to the constitution and law for the proposal to be implemented. He said there is one difficulty in the present situation, and that is to make amendments to the constitution and law. It is the government's responsibility to make those amendments through the parliament, he said. अपने संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था, और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए, और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए, और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन इसको कराने में सक्षम होगा। अब अभी की स्थिति की डिफिकल्टी तो एक ही है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में वो अमेंडमेंट कराना सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट से, तो उसके लिए सहमति बनानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इन अमेंडमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक इलेक्शन कमीशन बाध्य है कि जिससे विधानसभा की टेन्योर खत्म हो रही है उसका चुनाव करा दे वो। तो इसलिए पहला तो है अमेंडमेंट अगर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये तय कर लें कि कितनी ईवीएम वीवीपैट उनके पास है, कितनी की जरूरत है, लगभग 35 लाख की जरूरत होगी, तो वो गैप अगर है तो उसके लिए पैसा दे दें और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम दे दें, तो मिल जाएंगे। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की व्यवस्था कर लें तो इलेक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। मतलब ऐसे है, ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि 2-4 महीने में हो जाएं, साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगेगा। उन सबके बारे में पूरे विकल्प इलेक्शन कमीशन ने सुझाए हैं, फिर उसके बाद नीति आयोग ने भी सुझाए हैं, विधि आयोग ने भी सुझाए हैं, तो बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से तय हो वो आप विकल्प चुन लीजिए और करा लीजिए। वैसे इस पर कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई है जिसके आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा जा सके कि फायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इंप्रेशन ये आता है कि लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कर पाएं। Opposition party Congress, on the other hand, criticized the government's decision to appoint former President Ramnath Kovind as the committee chairman. I have never seen a former president being chosen to lead a government-formed committee. This role could have been entrusted to the former Chief Justices or retired Supreme Court judges. It appears that they are undermining the dignity of the President's office, especially given that the Prime Minister inaugurated the new Parliament building instead of the President. By doing this, they are establishing an unfavorable precedent, commented Pramod Tiwari. यही सब होंगे तमाशे, खिलवाड़, कमेटी, इरादे। पर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नियमों से भी चलती है और परंपराओं से भी चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर महामहिम राष्ट्रपति कोई भी कभी भी एक निश्चित समय के बाद बुला सकते हैं सत्र को, और जहां पे तो सत्र चल ही रहा हो, अवसान न हो, तो कभी बुला सकते हैं। परंतु ये परंपरा मैं पहली बार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अभी पढ़ लूंगा, शायद कोई उदाहरण हो। लेकिन रिटायर्ड, मेरा आशय है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके महामहिम राष्ट्रपति सरकार के अधीन या सरकार के प्रति जवाबदेह
या सरकार के द्वारा गठित किसी समिति के अध्यक्ष बने हों, ऐसा मुझे फिलहाल याद नहीं आता है। आखिर क्यों? क्या एक्स चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, या किसी और से कराई जा सकती थी? ये जानबूझकर महामहिम राष्ट्रपति को अपने अधीन एक कमेटी का अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूं पहले राष्ट्रपति पद की मर्यादा इन्होंने नष्ट की जब शिलान्यास और उद्घाटन कोविंद साहब को और अब वर्तमान राष्ट्रपति को नजरअंदाज करके खुद प्रधानमंत्री जी ने फीता काट दिया, और अब दूसरी बार इस तरह करके गलत परंपरा डाल रहा है। ये तो हवाई है। अभी एक आध मंत्रियों ने बोल दिया, पर अभी भी कोई कंक्रीट स्वरूप तो नहीं आया। तो क्या स्वरूप होगा, क्या किस रूप में होगा? अब जैसे एक समिति बनाई जा रही राष्ट्रपति जी के लिए, तो वो समिति अपनी रिपोर्ट क्या 1 साल के अंदर देगी, 6 महीने के अंदर देगी, 15 दिन के अंदर देगी, ये भी तो किसी को नहीं मालूम। तो जब तक उसका स्वरूप सामने न आ जाए, वर्तमान विधानसभाओं का क्या होगा? With different political leaders commenting on this matter, Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav on Friday made a bizarre suggestion when he was asked PM Modi to implement one nation, one income amid speculations of the implementation of one nation, one election ahead of the special session of Parliament scheduled for September 18 to 22. I would like to suggest PM Modi to first implement one nation, one income before thinking of implementing one nation, one election, Bihar Deputy CM Tejasvi Yadav said. तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल कर रही है, अब होगा क्या नहीं होगा, वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहां भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे, और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो धीरे धीरे, तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। Again returning to Patna on Friday night from Mumbai after attending two-day INDIA block meeting along with his deputy Tejasvi Yadav and RJD chief Lalu Prasad Yadav, when asked about one nation one election move of the Modi government, Nitish Kumar asked why the centre has not carried out a census in the country. We are doing a caste-based census in Bihar. The last census of the country happened in 2011 and the next census was scheduled in 2021. Why has the centre not done a census of the country? He asked. लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना, केंद्र सरकार तो कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना।
बोलिए, होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं, वे कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं जेडीयू? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में, जब आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है, हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। Meanwhile, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has hailed Prime Minister Narendra Modi for forming a committee led by the former President Ramnath Kovind to address the issue of one nation, one election. Sarma expresses contentment that a distinguished figure like Ramnath Kovind has accepted the Prime Minister's invitation to lead the committee. Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision by appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovind ji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely. Again, when asked about one nation, one election, Shiv Sena UBT leader Sanjay Rawat said one nation, one election is fine, but before that, hold fair elections. What is this one nation, one election? Does anyone doubt that the nation is one? This is a conspiracy by government to hold Lok Sabha elections earlier, he said. One nation and वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। आप देखो। Also joining the other political leaders that have commented on this issue, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, speaking about this issue on Friday, said that in a democratic setup with stability of government, speedy governance is needed for development, and with this point of view, one nation, one election is a commendable attempt. One election, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। As of today's update, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav on Saturday suggested a pilot program in Uttar Pradesh. The former chief minister said that simultaneous Lok Sabha and Assembly elections in India's most populous state would not only test the capability of the Election Commission of India, but the BJP would also get the idea of how eager the people are to remove them from power. Now, the political landscape has undergone significant changes since the Law Commission's previous discussions on one nation, one election issue in 2018. This change has been especially noticeable in states like Maharashtra, Jammu and Kashmir, now a union territory, Bihar and Punjab. There has been a major shift in the political dynamics, particularly within the opposition in recent months. Over 25 political parties have joined forces to unite against the BJP and work towards defeating the Saffron party in the upcoming crucial Lok Sabha elections next year. Looking back at the positions of different political parties in 2018 regarding one nation, one election, it's evident that there have been notable changes and shifts in their stances. When it comes to significant matters like these, there are definitely different opinions. Now, let's take a look at the parties that oppose the idea of simultaneous elections in India. According to the Law Commission's draft released on August 30, 2018, several opposition parties were against the proposal, including Congress, Trinamool Congress, AITC, Dravida Munitra Kazhagam, All India Majlis-e-Ittihaadul Musliman, Communist Party of India Marxist, Communist Party of India CPI, Telugu Desam Party, Aam Aadmi Party and Janata Dal Secular. Many of these parties are now part of United Opposition Bloc called INDIA, which includes Congress, Mamata Banerjee's TMC, MK Stalin's DMK, CPM, CPI and Arvind Kejriwal's AAP. Here are some of their objections to the proposal. That idea of simultaneous elections was unconstitutional and undemocratic and against the law. They believe that holding elections simultaneously was impractical and not in line with the constitutional provisions. Second, the TMC, which has been critical of the BJP and PM Narendra Modi, expressed concerns that simultaneous elections could create an emergency-like situation and go against constitutional provisions. Third, the DMK believe that simultaneous elections went against the basic principle of the constitution. They also pointed out that procuring electronic voting machines and voter-verified paper audit trials for simultaneous elections would cost around Rs 10,000 crores, which is significantly more than expenditure incurred in the 2014 general elections. They also argued that the proposal would not be economically efficient. Fourth, the CPI, Communist Party of India, believes that one nation, one election is just a wish of Prime Minister Modi and should only be discussed in Parliament. They think it would be unconstitutional. Fifth, the TDP, Telugu Desam Party, formerly an ally of the BJP and a potential ally in the 2024 elections, opposed the proposal. They said it might be a good idea but needs thorough study, planning and consensus. They were concerned that it could harm the constitution's basic structure and the multi-party system. 6. Arvind Kejriwal's AAP, Aam Aadmi Party, which recently aligned with parties like Congress and RJD, expressed concern that regional parties would be disadvantaged under the one nation, one election proposal due to limited financial resources, making it challenging for them to compete with national parties. 7. H.D. Kumaraswamy, JDS Janata Dal Secular, rumored to be in contact with the BJP in Karnataka for the 2024 Lok Sabha elections, argued that regional issues would take a backseat if elections were held simultaneously. In summary, these parties had various reservations about the idea of holding simultaneous elections.
ranging from constitutional concerns to practical and economic issues. Now, let's get to know more about the parties that are in favor of one nation, one election. In a surprising turn of events, the Samajwadi Party led by Akhilesh Yadav and the Bharat Rashtra Samiti, formerly TRS led by KCR, expressed their support for the one nation, one election proposal. Today, the Samajwadi Party is a part of the opposition's Grand Alliance, while the BRS is pursuing an independent political path. The Shiromani Akali Dal SAD, which was once an ally of the BJP in 2018, also backed the idea. The Biju Janata Dal BJD, led by Naveen Patnaik, and YSR Congress Party, led by Jagan Mohan Reddy, also supported the proposal. Now again, the Shiv Sena, which was then part of the BJP alliance, also voiced its support. The Shiv Sena noted that India constantly seems to be in election mode, with elections taking place in at least 5 to 7 states every year. This diverts government officials and paramilitary forces from their primary duties. They highlighted that India had simultaneous elections until 1967, and it is a practice worth revisiting. Now, Akhilesh's Samajwadi Party advocated for starting simultaneous elections for both the centre and state legislative assemblies as early as 2019. The Akali Dal, which parted ways with the NDA following the 2020 farmers' protest, believed that simultaneous election would help create a unanimous opinion among voters based on a party's manifesto, thereby strengthening both the state and central governments. The AIADMK expressed support with certain reservations, especially concerning the completion of a full 5-year term for the Tamil Nadu Legislative Assembly. They suggested that the merger of all elections could occur in 2024. Initially, the Indian Union Muslim League supported the proposal with some reservations, but later changed its stance. Again, the BRS, formerly known as the TRS, supported the idea, highlighting that the significant amount of time and resources are spent on conducting elections for both the Lok Sabha and the State Assembly every 5 years, causing administrative and security challenges. Now again, the BJT commended the idea, mentioning that it was first proposed and implemented by their party in 2004, leading to cost savings and efficient election management in Odisha. The YSRCP believed that implementing simultaneous elections would help monitor and control the activities of political parties, preventing them from enticing voters in ways that could negatively impact the public interest. The Shiv Sena parted ways with the National Democratic Alliance in 2019 and formed a government with Congress and the Nationalist Congress Party in Maharashtra. In July this year, NCP leader Ajit Pawar joined the Maharashtra government led by Eknath Shinde. However, it will be intriguing to see how many political parties maintain their stance on this subject, given the evolving political scenarios and dynamics in various states. Now let's look at the advantages and disadvantages of one nation, one election, according to observers. First, it's cost reduction. Holding separate elections is expensive, so having them all at once would save money. Second, it's less workload. Security and administrative teams would have less work since they wouldn't need to manage multiple elections. Third, it's focus on governance. Simultaneous elections would let the government concentrate on governing rather than being in constant election mode, which can hinder policy implementation. Fourth, higher voter turnout. It could increase voter turnout because it's easier for people to vote in multiple elections at once. Now let's look at the disadvantages. Firstly, it's legal changes needed. To implement one nation, one election, changes to the constitution and other law are required, which can be a complex process. Second, local issues overlooked. Local concerns might get overshadowed by national issues affecting state election results. Third, political agreement. Getting all political parties to agree is a major challenge, as we can see, and as opposition parties are against the idea. In simpler terms, one nation, one election can save money and reduce the workload, but it requires legal changes and could potentially sideline local issues. Agreement among all parties is also a significant hurdle. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.